Phasors and phasor diagram. This is our topic which we will study today. So good morning students. In phasors and phasor diagram, what we have some vectors. Few vectors we have. First of all, let me write the topic phasors and phasor diagram. Right. So like I said, phasors are nothing but some special vectors which represents. What are these? Phasors are special vectors which represent the strength of instantaneous current and instantaneous voltage at any time. This you can say about phasor. So what is phasor? Phasor are nothing but vectors which represent the strength of instantaneous current and instantaneous voltage. Okay, at any time we can represent the strength of alternating current and alternating voltage with the help of some special vectors. Those vectors only are known as phasors. There is one more use of phasors. What is that? Phase difference. Phase difference. Phase difference we can represent with the help of phasors. Okay, with the help of phasors we can also show that what is the phase difference between instantaneous current or instantaneous voltage. The next thing is where these phasors are drawn. Right, so phasors are drawn in phasor diagram. Phasors are drawn in phasor diagram. What we can say about phasor diagram? Diagram where phasors are drawn. जहाँ पर हम phasors को draw करते हैं उसी को हम क्या कहा करते हैं? फेजर डायग्राम कहा करते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पहले यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये एक्सेस बना लिए. ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट हियर द वेक्टर्स और यू कैन सी द फेजर्स विच आर रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी ड्राइंग दिस फेजर फॉर अ रेसिस्टिव सर्किट. राइट, for a resistive circuit. In the resistive circuit you have seen voltage is represented by Vm sin omega t and current is represented by Im sin omega t. That means there is no difference between the phase of alternating voltage and alternating current. Then if there is no phase difference between alternating current and voltage, then remember what do you have to remember? Remember that the phasors which will represent V and I, they will overlap each other. उनके बीच में क्या होगा, कोई भी एंगल नहीं बन रहा होगा. ठीक है, ओवरलैप कर रहे होंगे. लाइक सपोज, wait a minute, this is the, wait, yes, now we can draw. Suppose this is a vector which is representing the value of alternating voltage. Then can I ask where the vector representing current will come? So the vector which will represent current will also come along the same line. It will also come along the same line. Now why are they overlapping each other? Reason of overlapping we have written over here. Here we have written the reason of overlapping. They are overlapping because the phasors representing V and I don't have any फेज डिफरेंस. अगर कुछ फेज डिफरेंस होता
तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप आ जाता, ठीक है, एंगल बन जाता वहाँ पर फेजर्स के बीच में या वेक्टर्स के बीच में. नाउ देर इज़ वन मोर स्पेशल थिंग अबाउट दीज फेजर्स, एंड व्हाट इज़ दैट स्पेशल थिंग? दीज फेजर्स कैन रोटेट. ये फेजर्स क्या करते हैं? रोटेट करते हैं. दे रोटेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ साथ ये रोटेट करते हैं. रीज़न भाई आप लोगों को यहाँ दिख रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, दिस वैल्यू इज गोइंग टू चेंज. तो ये वैल्यू अगर चेंज होगी देन द पोजीशन ऑफ दीज फेजर्स विल ऑल्सो चेंज. और अगर फेजर्स की पोजीशन चेंज होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको मूव कराना पड़ेगा. सो ultimately to move these phasors we said that these type of vectors will rotate with respect to time so that the values of v and I can be obtained. Different values of v and I can be obtained. Right. Now before we proceed further, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ पर. पहले थोड़ा सा ये लाइंस ड्रॉ कर लूँ मैं, आप लोगों को समझाने में इजी हो जाएगा. ओके. एक चीज़ मुझे बतानी थी यहाँ पर. देखिए वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस v इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड आई एम साइन ओमेगा टी. हम इसे यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लीजिए आप लोग. एक मिनट. ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है. एक और लाइन में ले लूँगा यहाँ पर और उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँ. ठीक है. नाउ व्हाट आई कैन से, भाई ये जो दो लाइन आपको दिख रही हैं, these two blue lines which I have drawn over here, children, these two blue lines are showing the level of voltage and current in the phasor diagram. Okay, can you understand? Voltage level you can see with the line which is passing through the vector representing V, and the level of current you can see by the level of line passing through the arrowhead of I vector. Okay, तो मैंने क्या किया, इन चीज़ों से मैंने आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर कि करंट और वोल्टेज की क्या वैल्यूज़ होने वाली हैं. अब देखिए और इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और क्या मतलब, अभी तो किया ही नहीं है. देखिए ये जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आई. और ये जो रिप्रेजेंट कर दिया मैंने यहाँ पर, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द instantaneous value of voltage. Okay, this is instantaneous voltage, that means the value of Vm sin omega t, and this is the value of Im sin omega t. अब क्या होगा कि हो सकता है कि ये वेक्टर्स थोड़ी देर में रोटेट हो जाएं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था. तो अगर ये वेक्टर्स रोटेट हो जाते हैं, इन दैट केस आफ्टर सम टाइम व्हाट कुड बी द सिचुएशन, थोड़े टाइम के बाद क्या सिचुएशन हो सकती है. तो अच्छा एक चीज़ और, इन व्हाट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन विल वी अलाउ देम टू रोटेट? वी विल अलाउ देम टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन लाइक आई हैव शोन इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी. ओके, तो अगर ये रोटेट करते हैं तो सिचुएशन कुछ और हो जाएगी. अब हम आगे समझेंगे दूसरे फेजर डायग्राम्स की हेल्प से. दिस फेजर डायग्राम वॉज फॉर द रेसिस्टिव सर्किट बिटवीन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट. नाउ let us draw a fresh phasor diagram. This phasor diagram will be for inductive circuit. ये जो phasor diagram होगा inductive circuit के लिए होगा. Inductive circuit, by this circuit we know that we mean that voltage will be equal to Vm sin omega t and current will be equal to sin omega t minus pi by 2. Okay, these are the expressions of instantaneous voltage and current. Now let us draw the axis. Okay, axis this. So here I have drawn the two axes, right? Now I have to draw the vectors, the two vectors.
Children, here before drawing vectors, you look here. We know that there is a phase difference of pi by 2 radian between V and I, and out of this who will lag? Current will lag and voltage will lead, right? That means if we were rotating vectors in this direction, तो कौन सा वाला वेक्टर आगे चलेगा? सीधी सी बात है, जो लीड करेगा. एंड हु इज लीडिंग? आई. आई इज लीडिंग. कितना? पाई बाई 2. तो पहले मैं क्या करता हूँ, जो लैग कर रहा है, दैट मीन्स विच इज फॉलोइंग, ओके, जो बाद में आएगा उसको हम पहले ड्रॉ करते हैं. सो सपोज आई हैव ड्रॉन आई वेक्टर here. Okay, this is your I vector. I have written here. Now let us draw which vector? V vector. V vector, we know it is leading by I, leading with I by a angle of pi by 2 radian. So what I have to do, I have to make a vector. I have to make a vector which is making 90-degree angle, or you can say pi by 2 radian angle with the voltage vector, right? So this is the phasor diagram, okay. And how will we show the phase difference between them? Phase difference between them will be shown in the way, in this way. See, voltage, first of all I am showing this angle, voltage has a phase of omega t. So what I can say, this is omega t. And what I can say to this, if the whole was omega t, then how much we subtracted? 90. So it will be omega t minus pi by 2. This is the phasor diagram. This is the phasor diagram for inductive circuit. Okay, I hope you understood. So without any delay, let us draw phasor diagram for capacitive circuit also. So the third type will be capacitive circuit. Capacitive circuit. In capacitive circuit, we know voltage, it is Vm sin omega t, and current is Im sin, wait a minute, omega t plus pi by 2. So here in the phase we know it is plus pi by 2. That means here current is leading, right? Current is leading and voltage is lagging. By how much? By an angle of pi by 2 radian. So to draw phasors, what we need? First of all, we need axis. Now what is lagging? Here voltage is lagging. So what I will do, I will draw first of all voltage. Suppose this is voltage, right? Now I have to draw current vector. Current vector, we know it is leading by how much angle? Pi by 2. That means a vector will be drawn which is making 90-degree angle with the V vector. Wait a minute. Okay, this is our I vector. Now V is having a phase omega t, and what is the phase of I? I has a phase of omega t plus pi by 2. So both the phase we have shown, both the vectors we have shown, and in the anticlockwise direction we have taken both of them. So I hope you understood the way we have drawn all the phasor diagrams for the capacitive circuit, for the inductive circuit, as well as for the resistive circuit. If you have any query regarding all of these, you can watch once video again, and even if you have any confusion, you can ask questions by commenting here, or can ask in group. So thank you very much.
Keep revising and be safe at your home. Thank you.